Assalamu alaikum, dear students. Today our new topic is limits and derivatives. लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट किया। जो हमारा नया टॉपिक है, एक नया चैप्टर, नया लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले हमें लिमिट्स पढ़ने हैं। लिमिट्स होते क्या हैं, लिमिट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक, दिस चैप्टर इज एन इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस, and calculus is that very branch of mathematics which mainly deals with the change, the study of change, the value of function as the function in the domain changes, as the points in the domain change. That means calculus is that very branch जिसमें हम चेंज पढ़ते हैं, फंक्शन के बिहेवियर में चेंज क्या होता है व्हेन एवर डोमेन के पॉइंट्स चेंज होते हैं, फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा, दैट इज़ कैलकुलस। ठीक, और कैलकुलस का पहला टॉपिक जो है वो है लिमिट। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है लिमिट जो होगा ये भी किस रिलेटेड होगा, चेंज के रिलेटेड होगा। एक फंक्शन का वैल्यू कैसे चेंज होता है जब डोमेन के पॉइंट्स चेंज होते हैं। ठीक है, लिमिट्स में हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं। we'll take a function say f of x equal to x square. Okay, we take a function f of x equal to x square. Now observe the value of f of x whenever x takes very close to 0. When we take the values of x very close to 0, f of x का बिहेवियर क्या रहता है। ठीक है, अब देखिए f of x जो हमारा है वो है x square. Now take the values close to 0, not exactly 0. At x equal to 0, f of x is obviously 0. But when we approach towards 0, that means we are taking the values of x very close to 0 but not exactly equal to 0. Like we can take x equal to 0 0.01, 0 0.011, 0 0.002 or so on, like 0 0.1, 0 0.2, 0 0.3. ठीक, similarly from the left hand side of 0, we can take the values of x like 0. Minus 0.5, minus 0.6, minus 0.7, minus 0.9 and so on. Okay, f of x का वैल्यू क्या होगा, f of x जो है हमारा वो है x square. से we take x equal to 0.1, f of x is 0.1 square, that is 0.01. Okay, 0.01 is also very close to 0. That means when we define the function f of x equal to x square and we take the values of x very close to 0, that means we are approaching to 0. F of x is also approaching to 0. Like when we take f of x equal to 0.2, then 0.1, or we take x equal to 0.9, then 0.8, then 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. That means we are approaching towards x equal to 0. We are approaching towards 0. Okay, we are approaching towards 0. f of x जो है वो भी अप्रोच करता है 0 को। ठीक, ठीक है ना, और इसी को हम लिमिट कहते हैं, और ये हम डिफाइन करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, this is equal to 0. That means when we take the values of x very close to 0, f of x also approaches to 0. Okay, the values of f of x also takes towards 0. ठीक, and this is called limit. अब अगर हम जनरल में डिफाइन करेंगे इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू 0, इसी को हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0. ठीक,
ये हुआ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक। अब अगर हम इसी केस को जनरलाइज करते हैं, ठीक, जनरली हम ये कहते हैं कि वेन एवर एक्स अप्रोच टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स अप्रोच टू ए, इसका मतलब हुआ वी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स very close to a, very close to a, f of x tends to l, f of x tends to l. This a is a real number, l is a real number. when x tends to a, f of x tends to l, इसका मतलब हुआ जब हम a या x का वैल्यू a के क्लोज लेते हैं, f of x जो है इसका वैल्यू l के क्लोज होता है, ठीक। और इसको हम कहते हैं, इस l को हम कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन f of x when x tends to a, when x tends to a, और सिंबॉलिकली हम ये लिखते हैं लिमिट x tends to a, f of x equal to l, लिमिट x tends to a, f of x equal to l, ठीक। now consider the following function g of x equal to modulus of x, ठीक, x not equal to 0. Observe that g of 0 is not definite. Computing the value of g of x for values of x very near to 0, we see that value of g of x moves towards 0. So limit x tends to 0, g of x is equal to 0. And this initiatively clear from the graph of y equal to mod of x for x not equal to 0. See figure 2.13 in chapter number 2. See? If we define a function g of x as modulus of x when we take x close to 0, when we take x close to 0, जो g of x है वो भी अप्रोच किसको होता है, 0 को, दैट मीन इसी को हम कह सकेंगे फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, g of x इक्वल टू 0, दैट मीन g of x का लिमिट 0 है whenever x approaches to 0, whenever x approaches to 0, ठीक है। Now consider one more function, and this is important, much more important to this very function as far as limits are concerned. We have defined the function h of x by x square minus 4 divided by x minus 2 whenever x not equal to 0, because if x is equal to 0, x equal to 2, this very function is not defined. So we define this very function x square minus 4 divided by x minus 2, but x must not equal to 2, that means its domain is set of all real numbers except the point 2, ठीक। अब अगर हम इस फंक्शन का वैल्यू देखेंगे 2 पे तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि वेन एवर एक्स अप्रोच टू 2, दैट मीन्स वी विल टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स वेरी क्लोज टू 2, दैट मीन्स 2 पॉइंट समथिंग और slightly less than 2, we will take the values of x slightly greater than 2 or less than 2, okay, as at x equal to 2 the function is not defined. So now take the values of x close to 2, that means those are we take those values of x which are slightly greater than 2 or slightly less than 2, that means like x may be 1.999 or 2.1 or 2.2 or 2.3, similarly 1.9, 1.8, 1.7 which are close to 2, we will see the behavior of the function, okay, and that is limit of a function. That means we say limit x tends to h of x equal to some l, ठीक है। जब हम x का वैल्यू 2 के क्लोज देंगे फिर देखेंगे h of x का वैल्यू क्या होता है, we will take x equal to 2.3 and check h of x, then 2.2, check h of x, then 2.1, check h of x, that means we are approaching towards 2, we tend the values of x towards 2 and see the value of h of x, we will say, and see h value of h, and that way value is called the limit of the function, limit of h. Compute the value of h of x for values of x very near to 2 but not at 2. Convince yourself that all these values are near to 2, 4, ओके। ग्राफ से भी पता चलता है, ग्राफ इसका गिवन है फिगर में 13.2 फिगर जो हमारे यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, दी हुई है, इसमें गिवन है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब देखिए व्हेन x इक्वल टू 2, दैट इज दिस वेरी पॉइंट ऑन x एक्सिस 2, 0, व्हेन x इज 2, f of x इज 4,
along y डायरेक्शन दिस वेरी पॉइंट इज़ 4। ठीक, 2 पे ये डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के क्लोज जो भी पॉइंट्स हैं फ्रॉम लेफ्ट और राइट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज़ क्लोज टू 4। ठीक, तो हम ये कहेंगे इस फंक्शन का एच ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो 4 है व्हेन एवर एक्स टेंड्स टू 2। ठीक है, ग्राफ से हमें सीधे पता चलता है जब हम 2 के क्लोज लेते हैं पॉइंटर्स, जो एफ ऑफ एक्स है, जो इसका वाई वैल्यू है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, जो इसका वाई एक्सिस इसका वैल्यू है दैट इज़ 4। ठीक है, ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी है। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, वी कैन फाइंड द लिमिट, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन वायर एवर द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। We can't at such pointers we can't find the exact value, but by using limiters we are taking what we approach the we approach x towards that very point while a function is not defined, and check the value of the function. Okay, now here is a question. अब लिमिट समझ आया, लिमिट एक रियल नंबर होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन f है तो इसका लिमिट जो है वो l होता है, वो l रियल नंबर होता है। ठीक है, एल रियल नंबर होता है। दैट मीन्स एक फंक्शन का जो लिमिट होता है वो रियल नंबर होता है। लेकिन वो रियल नंबर हम निकालते कैसे, वो रियल नंबर हमें पता कैसे चलता है? हम क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को अप्रोच करते हैं, हम उस फंक्शन को अप्रोच करते हैं उस वैल्यू के क्लोज, तो हमें वहाँ से ये पता चलता है कि वैल्यू फंक्शन जो है, फंक्शन के वैल्यू में क्या क्या असर पड़ता है। ठीक, अब क्वेश्चन है यहाँ से ये कि अगर हम लिमिट देखते हैं, ठीक है, वी से लिमिट ऑफ ए फंक्शन of x is simply a real number when we approach x tends to some real number, say e. When we now the question is, when we approach x towards e, or in the first two examples we find the limit of the functions at x equal to 2, like when we define f of x equal to x square, and then in a second example g of x equal to modulus of x. In those two examples, in those very two examples, we find the limit of the function at x equal to 0. Now here is a question, or in third very example, this very h of x, when we define h of x, we find its limit at x equal to 2 in all these examples. Now question is, when we are approaching towards 2, when we approach x towards 2 or x approach to 0, x tends to 0, we can approach by two ways. That means x tends to 2 means x is very close to, x is very close to from two ways. Number one is from the right and number second is from the left. From the left means when we take the values of x very close to but slightly less than, like if we take x equal to 1.99, or if we take x equal to 1.90, we take x equal to 1.95, and so on. There are infinite number of values which are very close to. ठीक, but those are from left, those are slightly less than 2. ठीक, similarly we can approach to 2, we can approach 2 from right. That means if we take the values of x as 2.1 or 2.11 or 2.2 or 2.05, okay, now we have two ways to approach to a particular point. ठीक है, on this very basis the limit is defined in two ways. The limits are of two types. One we say left hand limit, and second one we say right hand limit. Now what is left hand limit? Left hand limit means when we approach from left. Suppose we have to approach 2, we have to find the limit of a function when x tends to 2. Now we can approach to 2 from two ways, from left and from right. Approach means when we take the values of the value of a point very close to a particular point. Okay, that means if we have to find the limit of a function when x tends to 2, that means we are going to take the values of x very close to 2, but we can take the value of x very close to from two ways, from left and from right. When we are talking about from left, that means we are going to take the values of x very close to but slightly less than 2. That means we will take 1.5,
then 1.6, then 1.7, then 1.8, then 1.9. Okay, that means we are approaching, we are tending towards 2. Okay, we are not taking exact value at x, that is x equal to 2. We are approaching. First we take x equal to 1.5, then x equal to 1.6, then x equal to 1.7, then x equal to 1.8, then x equal to 1.9. That means we are approaching towards 2, but from left, because we are taking slightly less values, we are approaching from left side, from left hand side. Okay, in the same way, if we approach from right, see, we have to find the value, we have to find the limit of a function, we have to find limit of a function, say at same very point at x equal to 2. ठीक है, अब यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोच कर सकते हैं from right side. That means we are taking very close values, we are taking the values of x very close to but slightly greater than, like we are taking x equal to 2.5, then 2.4, then 2.3, then 2.2, then 2.1. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 के क्लोज जा रहे हैं, हम 2 के क्लोज जा रहे हैं, बट फ्रॉम राइट साइड. ऑन दिस वेरी बेसिस द लिमिट्स आर ऑफ टू टाइप्स. Okay, one we call left hand limit and another one is called the right hand limit. ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे. वी आर टेकिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 वेन एवर एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड इट इज़ 2 वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन 0. ठीक, the function is defined by 1 whenever x is less or equal to 0 and it is 2 when x is greater than 0. We have to find the limit of this very function at x equal to 0, at x equal to 0. ठीक, we have to find limit x tends to 0 f of x. okay, now अब इसका लिमिट निकालने के लिए हम दो लिमिट्स देखते हैं. हमारे पास अब दो लिमिट है, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा है राइट हैंड लिमिट. ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, व्हेन x अप्रोच टू 0 from left side, that means we are taking very small, we are taking very close values of x equal to 0, but from left, that means we are taking x equal to minus 0.5, minus 0.4, 0.3, 0.2, 0.1. ठीक, in the same way when we are taking right hand limit, now we have to find limit x tends to 0 f of x. Limit left hand limit and right hand limit are denoted symbolically as, if we are talking about left hand limit, we denote it symbolically as limit x tends to 0 minus f of x. 0 super subscript minus. Okay, and similarly when we are symbolically denote right hand limit, we write it as limit x tends to 0 plus एफ ऑफ एक्स. ओके, अब यहाँ पे इस फंक्शन का अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज ऑफ एक्स क्लोज टू 0 बट लेस देन 0. and we know when x is less than 0 f of x equal to 1. that means limit x tends to 0 minus f of x किसके बराबर आएगा, लिमिट x tends to 0 f of x उस टाइम 1 है तो 1 के बराबर आएगा. ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ. ठीक, अब अगर हम इसी का क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो वो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x. ठीक, 0 प्लस मीनस वेरी क्लोज टू 0 बट slightly greater than, that means x is greater than 0, and we know when x is greater than 0 from this very definition, from the definition of the function f of x is equal to 2. ओके, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x हमारा 2 आएगा. ठीक, तो उसका मतलब हुआ ये जो हमारी फंक्शन थी, जो हमने फंक्शन डिफाइन की, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट हमें 1 मिला और राइट हैंड लिमिट इसका 2 मिला. ठीक है, in this case the right hand and left hand limits are different, and hence we say that the limit of f of x as x tends to 0 does not exist even though the function is defined at x equal to 0. ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है. लिमिट ऑफ फंक्शन एक रियल नंबर होता है. ठीक है ना, जब हम x को अप्रोच करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को. ठीक है, अब एग्जिस्ट कब लिमिट होता है, जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट होते होंगे और दोनों बराबर होंगे. ठीक है ना, तो उसका मतलब हुआ इफ़ वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन, वी विल फाइंड इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स राइट हैंड लिमिट,
and then see whether they both are equal or not. If both are equal, then we say the limit of the function exists and the common value and their common value जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का कॉमन वैल्यू होगा जब वो बराबर होंगे तो उनका जो कॉमन वैल्यू होगा उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन, उसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। समझ आया? Summary, we say limit x tends to a minus f of x is expected value of f at x equal to a given the value of f near x to left of a. This value is called the left hand limit of a f at a, and we say limit x tends to a plus f of x is expected value of f at x equal to a given the values of f near x to the right of a. This value is called the right hand limit of f at x equal to a. If the right hand limit coincides with the left hand limit, and we call their common value as the limit of the function and denote it as limit x tends to a f of x। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमें अभी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं और बाय सॉल्विंग सम मोर एग्जाम प्लस मोर क्वेश्चंस आपको लिमिट अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।